Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Kaleem, and the topic is pointers in C, and this is lecture number 14. The lecture outline is we will learn what is pointer, how we can declare pointers, dereferencing operator, initializing pointers, null pointers, increment and decrementing a pointer, pointers and functions, pointers to a function, declaring pointer to a function, assigning address of function to a pointer, calling mechanism of pointers to a function, passing pointers to functions, functions returning pointer values of variables, and some safe way to return a valid pointer. Well, what is pointer? We discussed that before as well. So it is a special kind of variable in which we store memory address. So pointer is a special variable which stores the memory address of another variable, not like an ordinary variable which stores the data value. This the use of pointer is normally in call by reference, and to understand the difference between call by reference and call by value, which we already discussed in first few lectures when we were talking about functions. So I suppose कि अगर आप कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होस्ट कर रहे हो और आपने किसी इवेंट के विनर का नाम अनाउंस करना है या उसको विनिंग प्राइज देना है, तो उसके दो तरीके हैं. एक तो ये है कि आप उसका नाम पुकारेंगे. सो वन वे ऑफ डूइंग इज और पासिंग द एड्रेस, पासिंग द प्राइज टू द विनर इज, आप कहेंगे जी विनर इज मिस्टर अहमद. मिस्टर अहमद स्टेज पे आएंगे और अपना प्राइज कलेक्ट करेंगे. दिस इज लाइक कॉल बाय वैल्यू. Call by reference, another method of passing the winning prize to the winner is अगर आप कहें कि रो नंबर 5 और सीट नंबर 8 पे जो साहब बैठे हैं, he is the winner of this particular event and he comes on stage and collect his winning prize. So that would be like हम अब एड्रेस दे रहे हैं जहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ था. तो this is like call by reference. सो नीचे पिक्टोरियली मैं ट्राइंग टू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप इंट एक्स कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व हो जाती है और नीचे उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है विच इज से फॉर इंस्टेंस इन दिस केस इज 60,000 और उस मेमोरी लोकेशन में के ऊपर एक लेबल लग जाएगा. अगर इंटीजर एक्स आपने डिक्लेयर किया है तो वेरिएबल एक्स का लेबल उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर लग जाएगा. लेकिन नेवरदलेस वो मेमोरी लोकेशन एक मेमोरी एड्रेस रखेगी और इस सूरत में वो 60,000 है. और फिर बाद में हम उसको उस मेमोरी लोकेशन या बॉक्स में कोई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स असाइन किया गया है. How we can declare a pointers? The prototype or the syntax of pointer is पहले तो डेटा टाइप उसकी लिखेंगे. सो यहाँ पे लिखा गया है कि int space star myptr. Keep in mind there is no space between the star and myptr. तो डेटा टाइप फिर स्पेस फिर star myptr. So we will read from right to left. So myptr is a pointer to an integer. Likewise, we could have a second declaration जहाँ पे कोई x pointer है and it is pointing to double. या data type उसकी double है. Likewise, we could also have a pointer c pointing to char data type. After declaring, we want to assign address to a pointer. कि जो pointer है वो किस memory address को point कर रहा है. ठीक है, तो
जस्ट लाइक लास्ट स्लाइड हमने देखा कि डिक्लेरेशन इज डेटा टाइप स्पेस एंड देन स्टार पीटीआर। सो यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेरेशन है फर्स्ट लाइन पे, जो कि पॉइंटर इज ए होल नंबर बिग एनफ टू स्टोर मेमोरी एड्रेस। तो ये इंटीजर 4 बाइट्स की मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। और फिर मैं आगे नेक्स्ट लाइन में कह रहा हूँ कि इंट एक्स, सो डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, और उस वेरिएबल का नाम एक्स है। और फिर मैं वेरिएबल एक्स को कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, सो एक्स असाइन 10 सेमीकोलन। और फिर चूंकि मैं चाहता हूँ कि पॉइंटर को जो मैंने डिक्लेयर किया था वो पॉइंटर अब किसी खास मेमोरी एड्रेस या इस वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर दें। तो द वे टू एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन पॉइंटर एंड the variable here in our case is x, we use address operator। तो the line in red is ptr, जो कि हमने ऊपर पॉइंटर डिक्लेयर किया था, assign address operator x semicolon। so this is the way we assign a link, or we are asking pointer now to point to the memory address of a variable x, so assigning the address of x to the pointer ptr। now remember x has value 10, तो मैं चाहता हूँ कि पॉइंटर जो है वो अब जो x मेमोरी एड्रेस पढ़ रहा है अब उसके अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको भी पढ़े। So the way we do it is using a star operator. This is also called dereferencing operator. So dereferencing operator is also called star operator. So star PTR is read as the value of whatever PTR points to। तो मैं कोई भी ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है स्टार पीटीआर टाइम्स 2 सेमीकोलन, तो स्टार पीटीआर नाउ क्या करेगा कि वैल्यू पड़ेगा एक्स के अंदर। पहले वो अगर मैं खाली पीटीआर लिखता हूँ तो खाली पीटीआर आफ्टर डिक्लेरेशन, खाली पीटीआर मींस द मेमोरी एड्रेस, ठीक है। और अगर मैं स्टार लगा लेता हूँ तो फिर इसका मतलब वो जो मेमोरी एड्रेस जिस पे वो पॉइंट कर रहा था उसमें अब वो वैल्यू पड़ेगा। तो अगर हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखें तो स्टार पीटीआर टाइम्स 2 मींस स्टार पीटीआर जो है वो वैल्यू पड़ रहा है एक्स की, तो एक्स की वैल्यू हमने लास्ट स्लाइड में 10 रखी थी, तो 10 टाइम्स 2 जी को क्या असाइन करेगा 20। नेक्स्ट इज इनिशियलाइजिंग ए पॉइंटर। यू कैन इनिशियलाइज ए पॉइंटर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एज वेल कर सकते हो, बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन गुड प्रैक्टिस इज टू ऑलवेज इनिशियलाइज ए पॉइंटर। तो पॉइंटर फर्स्ट लाइन में है कि पॉइंटर पीटीआर इज असाइन एड्रेस ऑपरेटर वीआर। सो मैं किसी वेरिएबल वीआर का जो एड्रेस है वो असाइन कर रहा हूँ पीटीआर पॉइंटर को। कीप इन माइंड ये एड्रेस असाइनिंग है यानी कि इनिशियलाइजेशन है, इससे पहले मैं एज्यूम करें कि पीटीआर डिक्लेयर हो चुका हुआ। और आई कैन आल्सो असाइन पीटीआर is equal assign 0, or ptr can also be assigned null। so null is a global constant declared in a header file hash include में, और 0 and null pointer means the pointer is pointing to nothing, ठीक है। तो पॉइंटर को आप किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस भी असाइन कर सकते हो और पॉइंटर को स्टार्टिंग में एज ए नल भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। A little bit more about null pointer because we will be using in our programs. Null pointer is a pointer which is pointing to nothing. Null pointer points to empty location in the memory. Value of null pointer is 0. So we can make a pointer to point to null as, यहाँ पे दो पॉइंटर्स हैं, एक का डेटा टाइप इंटीजर है और ये क्या है यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हुए उसे इनिशियलाइज भी कर दिया गया। तो इंट स्पेस स्टार पी असाइन नल सेमीकोलन मींस मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एक पॉइंटर
टू इंटीजर और उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ नल से. एंड लाइकवाइज आई एम डिक्लेयरिंग अनदर पॉइंटर स्टार पी, उसके डेटा टाइप 4 है और उसको भी इनिशियलाइज कर रहा हूँ नल. सो एट दिस टाइम दे आर पॉइंटिंग टू नथिंग. सो नल इज जनरली नॉर्मली वी यूज for pointers. Once you declare a pointer and then initialize a pointer, then you want pointer to read the value जिसको वो जिस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस वो देख रहा है या पॉइंट कर रहा है. So here is an example: int space star pc comma c semicolon. So I'm declaring a pointer as well as a variable c of data type integer. और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में c assign 5 semicolon means is another statement जिसमें मैं c को 5 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ. और फिर चूंकि एक पॉइंटर है और एक वेरिएबल है, टू establish a link between pointer and variable, so I want now the memory address of a variable should be assigned to the pointer. So I will use pc assign address operator c semicolon. Keep in mind कि जब मैंने डिक्लेयर किया है pc एज ए पॉइंटर तो डिक्लेयर करते हुए डेटा टाइप और स्टार यूज किया है. लेकिन जब मैं पॉइंटर को कोई मेमोरी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ किसी वेरिएबल का तो मैं स्टार यूज नहीं कर रहा. तो अगर आप देखें द लास्ट लाइन इन दिस पीस ऑफ कोड, नो द बिफोर printf pc assign एड्रेस ऑपरेटर सी सेमीकोलन. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लिंक एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन लिंक एस्टेब्लिश करते हुए मैं स्टार यूज नहीं करता. कीप इन माइंड जब डिक्लेयर करना है पॉइंटर को तो स्टार ऑपरेटर, लेकिन जब एड्रेस किसी वेरिएबल का किसी एक वेरिएबल का असाइन करना है किसी पॉइंटर को तो स्टार नहीं यूज होगा. लेकिन जब मैंने वैल्यू पढ़नी है किसी वेरिएबल की जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, then I again need star operator. So here is a printf calling of a printf function और star pc semicolon shows कि अब वो वैल्यू पड़ेगा जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है. तो चूंकि हमने c का एड्रेस दिया था पॉइंटर को तो star pc will give me the value of c now and the output of this piece of code would be 5. Note that in the above example, PC is a pointer, not star PC. Keep in mind, declare करते हुए हमने star PC कहा, लेकिन वैसे अगर मैं कहूँ pointer तो इस will be just PC is a pointer. You cannot and should not do something like star PC assign address operator C semicolon. So this will be wrong. जब आपने एड्रेस किसी वेरिएबल का पॉइंटर को असाइन करना है तो ये जो एड्रेस ऑपरेटर है जहाँ पे ये लगेगा तो वहाँ पे स्टार ऑपरेटर नहीं लगेगा. ठीक है. सो कीप इन माइंड जब हमने एड्रेस किसी वेरिएबल का देना है तो हम एक तो एड्रेस ऑपरेटर उस वेरिएबल के नाम के साथ लगाएंगे, दूसरा जो जो पॉइंटर होगा उसके साथ स्टार नहीं लगेगा, स्टार ऑपरेटर नहीं लगेगा. Here is a program, simple program which changing value pointed by pointers. So I have first line int star pc comma c semicolon, which means I'm declaring a variable c as well as a pointer by the name pc of data type integer. और नेक्स्ट लाइन में c असाइन 5, मैं c में एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5. फिर मैं पॉइंटर और ए वेरिएबल जो कि c है इन दिस केस, मैं उनमें लिंक एस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि पॉइंटर जो है पॉइंट करे c को. तो इन अदर वर्ड्स आई एम असाइनिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ c टू पॉइंटर pc. और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में कर रहा हूँ कि c को 1 असाइन कर रहा हूँ. तो c में पहले 5 पड़ा था तो अब c में क्या होगा 1. और फिर I run 2 times printf statement. So printf
सी प्रिंट करेगा, खाली सी जो है इट आल्सो गिव यू द वैल्यू। जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि कोई जो वेरिएबल है इट स्टोर्स द वैल्यू, जबकि पॉइंटर जो है इट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस। लेकिन जब हम पॉइंटर के साथ स्टार लगाएंगे तो इट विल गिव अस द वैल्यू इट इज पॉइंटिंग टू। तो प्रिंट सी भी वही आउटपुट देगा, प्रिंट स्टार पीसी विल आल्सो गिव अस द सेम वैल्यू बिकॉज पीसी एंड PC star and C are the same thing. So output will be 1 1 in both cases print out. Keep in mind again I repeat myself, तीन चीजें हैं important. जब आपने पॉइंटर को डिक्लेयर करना है तो स्टार ऑपरेटर लगाना है। जब आपने पॉइंटर को किसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना है तो स्टार ऑपरेटर नहीं लगाना। लेकिन जब आप चाहते हो कि उस वेरिएबल की वैल्यू पड़े देन यू अगेन नीड ए स्टार ऑपरेटर। तो आपने देखा कि जब हमने डिक्लेयर किया तो स्टार ऑपरेटर, जब हमने असाइन की मेमोरी एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल टू द पॉइंटर वो यूज एड्रेस ऑपरेटर, लेकिन स्टार पॉइंटर के साथ नहीं लगा। और जब हम चाहते हैं कि पॉइंटर उस मेमोरी एड्रेस से वैल्यू पढ़े तो देन वी अगेन यूज स्टार पीसी। So here's a note at the end. We have assigned the address of C to the PC pointer. Then we change the value of C to 1. जैसा कि हमने देखा कोड में पहले 5 थी फिर 1 हो गई। Since PC and the address of C is the same, ठीक है, तो P star PC will also give us 1. तो वो star PC will give us the value stored in the C, जो कि करंट वैल्यू 1 है। दिस इज आल्सो ए डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स, लेकिन डिफरेंट वे ऑफ डिक्लेयरिंग ए पॉइंटर्स। तो एक लाइन पे भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। सो ptr1 is a pointer to an integer is one kind of declaration. We could have mixed declaration, जो कि अभी हमने देखा भी है एक प्रोग्राम में पिछले में, कि we could declare a variable and a pointer on the same line having a same data type, and we could declare a pointer as well as a variable and an array, all of them having the same data type. Here in this case it is integer. So note the address operator is also called bitwise operator in C, by the way, cannot be used in an mathematical expression. So you cannot have address operator x plus 1 or any other mathematical expression. But what you can do is you can write address operator with the variable name like address operator x or address operator y. Here are some common mistakes one can make while dealing with pointers. Suppose आपने एक pointer और एक c variable दोनों declare किए हैं of integer type, तो अगर आप लिखें कि PC assign C, this would be wrong, क्योंकि C जो है वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू, इस ए नॉर्मल वेरिएबल, जबकि PC जो है वो रिप्रेजेंट करता है द pointer which should be holding the memory address. तो value and memory address should not be the same. So this is an error. The second error one can make is star PC, मैं कह रहा हूँ, जो कि वैल्यू पढ़ रहा है किसी पॉइंटर की, और assign memory address of C. तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आप मेमोरी एड्रेस किसी का असाइन करेंगे पॉइंटर के साथ तो उसका स्टार नहीं यूज करना। So both first two statements are wrong. The right way of doing these two statements are assign, जब भी एड्रेस किसी वेरिएबल का करना है तो स्टार ऑपरेटर नहीं यूज करना। तो PC इज ए पॉइंटर, और जब उसको पास करना है किसी का मेमोरी एड्रेस तो वी विल यूज एड्रेस ऑपरेटर और साथ उसके जो भी वेरिएबल का नाम है एंडिंग विद ए सेमीकोलन। और अगर हम चाहते हैं कि वो वैल्यू पड़े पॉइंटर देन वी यूज स्टार ऑपरेटर असाइन C. दिस इज द सेम थिंग। C को प्रिंट करूंगा तो वो भी C की वैल्यू प्रिंट करेगा, और स्टार PC को प्रिंट करवाऊं तो वो भी C की वैल्यू प्रिंट करेगा जिस पे वो पॉइंट कर रहा है। इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग ए पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर इज आल्सो ए काइंड ऑफ वेरिएबल,
तो लेट्स स्टार्ट के नॉर्मली हम किसी वेरिएबल को जब इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या होता है, सो व्हेन यू इंक्रीमेंट अ वेरिएबल यू यूजुअली ऐड वन टू इट. फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ आई इन द फॉलोइंग कोड विल बी 1. जब आपने एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया इंट आई और उसी वक्त उसको इनिशियलाइज कर दिया 0, तो उसमें उसके मेमोरी एड्रेस में 0 पड़ा है. फिर उसको जब आप आई प्लस प्लस करते हो, इंक्रीमेंट करते हो, तो आई की वैल्यू अब 1 हो जाती है. लेकिन पॉइंटर की सूरत में क्या होगा? Because a pointer points to a memory address which is also a numerical value, you can also increment a pointer. However, you are incrementing by address value instead of the integer value. चूंकि पॉइंटर अगर इंटीजर है तो इंटीजर 4 बाइट का होता है. तो जब आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे तो पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड टू द 4 बाइट ahead of the current memory location. Because so therefore, if your integer pointer has a value of 62FE30, ये hexadecimal representation है किसी memory address की, तो जब मैं pointer को increment करूँगा तो it will be 4 bytes away from this memory address. So incrementing the pointer will result in a new memory address of 62F234. तो आप देख सकते हो कि 4 byte का ahead है this memory address. Note that the memory addresses are stored as hexadecimal values. The decimal value of 62F234 is 6487604 अगर आप उसे decimal में convert करें. Now here is a program which shows how we can increment a pointer. So the following code loops through an array, incrementing the pointer along the way in the for loop using a for loop. It displays the address PTR and the value star PTR. Remember, keep in mind जब मैंने address किसी array के member का array के element का print करवाना है तो मैं without star operator use करूँगा. जब मैंने पॉइंटर को यूज करना है कि उस एलिमेंट की वैल्यू पढ़ो तो स्टार ऑपरेटर यूज करना है. सो कीप इन माइंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम. हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड io.h pre-processor directive int main void starting curly bracket. So I'm declaring an array by the name scores of data type integer. और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 3 एलिमेंट्स के साथ. सो कर्ली ब्रैकेट में 1500 1700 and 2250 ending curly bracket and then semicolon. और फिर आई एम यूजिंग अनदर वेरिएबल आई और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0. आई एम अगेन इन declaring and initializing a pointer. तो मैं ptr is a pointer to an integer और उसको इनिशियलाइज कर दिया null. At this time is pointing to nothing. और फिर मैं लिंक इस्टेब्लिश कर रहा हूँ पॉइंटर का और अरे का. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि scores which is the name of array assign ptr. Keep in mind हम पहले ये array में पढ़ चुके हैं कि name of array represents the memory address of the first element of the array. I do not need to put address operator. Even you put it, it will work in that case as well. But keeping in mind the name of array is always represents the memory address of the first element of the array. So ptr assigns scores. I'm asking pointer to now point at the array. और फिर मैं for loop लगा रहा हूँ. I assign 0, I less than 3, I plus plus. तो I की वैल्यू 0 के लिए कंडीशन ट्रू होगी, 0 is less than 3, and then 2 actions will be performed. print f पहले वो ptr प्रिंट करेगा और दूसरा एक्शन है print f p star ptr. तो जो सिंपल ptr है विदाउट स्टार ऑपरेटर इज द मेमोरी एड्रेस. और जब मैं स्टार लगा दूंगा तो वो प्रिंट करेगा the value stored at that memory address. और फिर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ and this will continue till the size of the array and the program terminates. So the output
वन कैन सी के पहले प्रिंट आउट में वो मेमोरी एड्रेस पढ़ता है पहले अरे के मेंबर का, और फिर उसकी जो वैल्यू है वो पढ़ता है। अगर आप प्रिंट एफ में देखें तो पहले पीटीआर है और दूसरी प्रिंट एफ स्टेटमेंट में स्टार पीटीआर है, तो सेकंड टाइम वो पहला एलिमेंट की वैल्यू पढ़ रहा है। ठीक है, और फिर दोबारा जब दोबारा फॉर लूप चलता है तो फिर वो नई मेमोरी एड्रेस जिसपे वो नेक्स्ट मेंबर स्टोर है वो पढ़ता है और फिर उसकी वैल्यू पढ़ता है 1700, एंड लाइकवाइज द थर्ड। Another example, because a pointer points to another value that is an address in the memory, it is also useful for an array processing. We just did an array processing, but here is another way of looking at it. We can indicate the bucket of an array by using its index, but we can also use pointers. For example, look at the following array and how the incrementing works. So उसी तरह प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है int main parenthesis void और फिर स्टार्टिंग करली ब्रैकेट, और मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ स्कोर के नाम से ही एक अरे ऑफ डेटा टाइप int, और उसका साइज 5 है, और करली ब्रैकेट में मैं उसे 5 वैल्यूज दे रहा हूँ या 5 उसके एलिमेंट्स असाइन या इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और फिर मैं पॉइंटर एक डिक्लेयर कर रहा हूँ स्टार पीटीआर के नाम से, और उसे डिक्लेयर करते हुए साथ इनिशियलाइज कर रहा हूँ नल एट दिस टाइम इट इज पॉइंटिंग टू नथिंग। और फिर मैं कह रहा हूँ कि पॉइंटर, अब पॉइंटर को अरे का एड्रेस पास कर रहा हूँ। तो पीछे हमने रिमेंबर मैंने कहा था कि अगर आप एड्रेस ऑपरेटर्स नाम के साथ ना भी लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि ना नेम ऑफ द अरे always represents the memory address of the first element. अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि एड्रेस ऑपरेटर के साथ नाम लिखा है, पर्पस वही है, वी आर पासिंग द एड्रेस ऑफ अरे टू द पीटीआर टू द पॉइंटर। अब पॉइंटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, और फिर नेक्स्ट प्रिंट एफ स्टेटमेंट है जिसमें मैं प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो जब मैं प्री इंक्रीमेंट कर दूंगा पॉइंटर और साथ प्री इंक्रीमेंट के साथ स्टार लगा हुआ है, अगर यू सी द प्रिंट एफ स्टेटमेंट तो स्टार है, तो इसका मतलब है कि वो दूसरे प्री इंक्रीमेंट है तो वो दूसरे एलिमेंट को देखेगा, और देखने के साथ उसका मेमोरी एड्रेस नहीं बल्कि उसकी वैल्यू पड़ेगा। अगर मैं स्टार प्लस प्लस, अगर मैं स्टार की जगह सिर्फ प्लस प्लस पीटीआर लिख दूं यहाँ पे, तो वो दूसरे मेंबर की या दूसरे एलिमेंट की, अरे के दूसरे एलिमेंट की मेमोरी एड्रेस प्रिंट करेगा। So the output of this current program in current condition is 235, which is the second element of this array by the name scores. In this case, we use increment operator before the pointer variable like plus plus ptr, and we use star operator so that we could read the value stored at the second position. So when you run this program, it will indicate the second index because you have incremented the pointer by 1. Just polish our skills of pointers. Here are two more simple examples. So int स्टार pc और c दो, एक पॉइंटर है एक वेरिएबल है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, डिक्लेयर किया है, फिर c को वैल्यू 5 असाइन की है, और फिर c और पॉइंटर के दरमियान लिंक इस्टेब्लिश किया है, आई पास द एड्रेस ऑफ c टू द पॉइंटर pc, और फिर स्टार pc असाइन 1, पॉइंटर को मैंने 1 असाइन कर दिया। चूंकि c और PC is the same things, likewise star PC और C is also same. So अगर मैं star PC print करूं या C print करूं तो output would be the same because both pointing to the same value. C also represents value 1. C की वैल्यू पहले 5 थी, लेकिन चूंकि मैंने C को का एड्रेस जो है वो
वेरिएबल पॉइंटर को असाइन कर दिया और फिर पॉइंटर को 1 वैल्यू असाइन कर दी, तो इसने क्या किया, इसने सी के मेमोरी एड्रेस में जाके 1 लिख दिया। इसी तरह की एग्जांपल पीछे की थी हमने, जहाँ पे हमने सी पहले 5 असाइन किया था, फिर सी को 1 वैल्यू असाइन कर दी। क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सी विदाउट एड्रेस ऑपरेटर या स्टार पीसी, दोनों में से किसी एक की भी नई वैल्यू आप असाइन करेंगे तो वो वहाँ पे नई वैल्यू उसके घर में जाके नई वैल्यू लिख देगा। तो स्टार पीसी आउटपुट 1, प्रिंट एफ सी भी प्रिंट करेंगे तो वो 1 ही प्रिंट करेगा। Another program example 2, int star pc cd. In this case I am declaring two variables cd और फिर एक pointer pc of same data type integer, फिर c को कोई वैल्यू 5 असाइन कर रहा हूँ, d को -15 असाइन कर रहा हूँ और फिर पॉइंटर जो मेरा pc है उसको उसको मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट करो टुवर्ड्स द वेरिएबल c। तो नाउ माय पॉइंटर pc इज लुकिंग और पॉइंटिंग एट c। तो जब मैं स्टार pc करूंगा तो वो c की वैल्यू प्रिंट करेगा क्योंकि वो इज पॉइंटिंग टू दैट मेमोरी लोकेशन। तो आउटपुट वुड बी 5। नेक्स्ट लाइन पे जाके अब मैं उसी पॉइंटर को नया मेमोरी एड्रेस जो कि अनदर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है d, उसकी मेमोरी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। अब पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू न्यू मेमोरी एड्रेस विच इज अनदर वेरिएबल d, और अगर मैं स्टार पीसी करूंगा तो वो d की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो माइंड पॉइंटर वेरिएबल इज ए जैसा कि एनी अदर वेरिएबल, और जब भी मैं उसे कोई नया मेमोरी एड्रेस असाइन करूंगा तो इट विल बी पॉइंटिंग टू दैट मेमोरी एड्रेस, और जब मैं उसके साथ स्टार लगाऊंगा तो वो उस मेमोरी एड्रेस में छुपी हुई वैल्यू को रीड करेगा एज शोन इन दिस प्रोग्राम। Another example which will further polish our knowledge of pointers and how pointers are used to read memory address and the value stored in that memory address. So I'm declaring a pointer and a variable c. So pointer is pc and a variable c of same data type integer, और फिर c को मैं कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 22। तो अगर मैं c एंड साइन यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी एड्रेस सी का प्रिंट करेगा। और अगर प्रिंट एफ कमांड में खाली सी करूंगा तो ये विल गिव मी द वैल्यू ऑफ सी विच इज 22 अभी हमने असाइन की। और फिर आगे चल के मैं पॉइंटर और सी में मैं लिंक इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। अभी तक मैंने पॉइंटर को कोई मेमोरी एड्रेस असाइन नहीं किया था। ठीक है, वैसे तो इसे गुड प्रैक्टिस, अगर आपने नहीं किया पॉइंटर को कोई मेमोरी एड्रेस तो नल इनिशियलाइज करवा दें और फिर उसे पॉइंटर को किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस असाइन कर दें। तो नेवरदलेस अभी पहले तो एम्परसैंड एड्रेस ऑपरेटर सी वो मेमोरी एड्रेस देगा सी का और फिर वैल्यू सी की प्रिंट करेगा, और फिर जब मैंने पॉइंटर को लिंक कर दिया मेमोरी एड्रेस सी के साथ, तो जब मैं अब पीसी प्रिंट करता हूँ तो पीसी विल गिव मी द मेमोरी एड्रेस ऑफ सी नाउ, क्योंकि पीसी एंड मेमोरी एड्रेस सी इज द सेम, क्योंकि पीसी माय पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन सी एंड स्टार पीसी विल गिव मी द वैल्यू स्टोर्ड इन सी। तो वैल्यू स्टोर जो अभी अब हम पता है कि वो वैल्यू स्टोर करेगा। और फिर आगे चल के मैं सी असाइन 11, मैं सी की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे 11 लिख दिया। अब अगर मैं वही दोनों प्रिंट एफ की कमांड रिपीट करूँ तो पीसी विल गिव मी द मेमोरी एड्रेस अगेन द सेम, क्योंकि इट इज स्टिल पॉइंटिंग टू सी, लेकिन उसकी वैल्यू सी की चेंज हो चुकी है। अब स्टार पीसी विल गिव मी द वैल्यू न्यू वैल्यू ऑफ सी विच इज 11, और फिर मैं पॉइंटर स्टार पीसी असाइन टू, अब मैंने पॉइंटर को 2 असाइन कर दिया, और चूंकि पॉइंटर और सी दे आर लिंक विद ईच अदर, तो अब सी में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा। पॉइंटर ने क्या किया, जाके सी की लोकेशन में जहाँ पे 11 लिखा हुआ था वहाँ पे 2 लिख दिया। सो इफ आई प्रिंट एंड ऑपरेटर एड्रेस सी, और फिर अगर मैं वैल्यू प्रिंट करूंगा तो ये सी की न्यू वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। रिटर्न 0 सक्सेसफुल टर्मिनेशन एंड कर्ली ब्रैकेट tells the end of main function.
आउटपुट क्या है अगर आप देखें तो एड्रेस ऑफ सी कांस्टेंट है हर एक प्रिंट आउट स्टेटमेंट में, जबकि वैल्यू ऑफ सी पहले पॉइंटर के बगैर भी सी थी, जब पॉइंटर असाइन कर दिया वेरिएबल के साथ तो वैल्यू तो ज़ाहिर अभी चेंज नहीं की थी हमने, तो 22 है। जब हमने सी की वैल्यू 11 कर दी तो पॉइंटर ने नई वैल्यू प्रिंट कर दी। जब हमने पॉइंटर को वैल्यू नहीं असाइन कर दी तो पॉइंटर ने क्या किया, फोर्सफुली सी की मेमोरी लोकेशन में जाके 2 लिख दिया। सो अब अगर आप देखें तो आउटपुट में सी मेमोरी एड्रेस इज द सेम थ्रू आउट, लेकिन वैल्यू ऑफ सी इज चेंज एंड द लास्ट वैल्यू इज सी इज 2। पासिंग पॉइंटर्स टू ए फंक्शन हमने पहले जब कॉल बाय रेफरेंस था हम कर चुके हैं। So here is I'm just repeating some of the main points to just to refresh our knowledge. So I just read them out. When we pass a pointer as an argument instead of a variable, then the address of the variable is passed instead of the value. ये जब हमने compare किया था call by value and call by reference, वहाँ पे ये point mention था, ठीक है। So I'm just refreshing our knowledge of call by value and call by reference, and pointer is all कॉल बाय रेफरेंस के पॉइंट ऑफ, क्योंकि आप मेमोरी एड्रेस देते हो किसी वेरिएबल का rather than the actual value. So any change made by the function using the pointer is permanently made at the address of the passed variable. And the second point to keep in mind is pointers as a function parameter is used to hold addresses of arguments passed during function call. This is also known as call by reference. When a function is called by reference, any change made at the reference variable will affect the original variables. हमने अभी देखा कि वो c की वैल्यू जो भी नई आपने पॉइंटर ने अगर p असाइन 2 कर दिया तो c में उसने जो पहले लिखा था 11 या 1 लिखा था, एक और एग्जांपल में उसने पॉइंटर ने जाके उसकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर दिया, 2 कर दिया। Another example जो कि already we have gone through it, swapping two numbers using pointer. I will not explain that because this has been done in the lab as well. तो pointer को use करते हुए दो variables को swap करना है। तो कोई function डिक्लेयर किया है स्वैप के नाम से और उसका आर्गुमेंट में दो पॉइंटर हैं ऑफ इंटीजर टाइप हैं। मेन के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए m and n और उसको वैल्यूज असाइन की 10 and 20, और फिर बिफोर स्वैपिंग उनकी वैल्यू प्रिंट की। जाहिर है कि m और n की जो वैल्यू है बिफोर स्वैपिंग इज 10 and 20 आएगा। फिर स्वैप फंक्शन को कॉल किया गया एंड चूंकि इस कॉल बाय रेफरेंस है तो एड्रेस ऑपरेटर m कॉमा एड्रेस ऑपरेटर है m और एड्रेस ऑपरेटर n के साथ कॉल किया गया फंक्शन, और फिर उसके बाद दोबारा प्रिंट किया गया कॉलिंग ऑफ फंक्शन के बाद फिर प्रिंट किया गया कि अब m और n की वैल्यू क्या है। तो जब कॉल किया गया तो फंक्शन क्या करता है कि फंक्शन इज यूजिंग पॉइंटर्स a एंड b, और फिर हमने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर एक और वेरिएबल टेम्प के नाम से जहाँ पे हम टेम्परेरी वैल्यू रखेंगे a की और फिर b की वैल्यू a में असाइन करेंगे और जो टेम्प में वैल्यू a की रखी थी वो b में असाइन करेंगे। तो इस तरह हमने जो a की वैल्यू है वो b में कर दी और जो b की वैल्यू है वो a में कर दी। आफ्टर स्वैपिंग अगर आप देखें आउटपुट ऑन द राइट हैंड साइड, बिफोर स्वैपिंग m was 10 and after m was 10 and n was 20, and after swapping or calling of a function m became 20 and n became 10. Functions returning pointer variables. So this is also we gone through, but here is some caution one should take care of. A function can also return a pointer to the calling function. If in this case you must be careful because local variable of function does not live outside the function. Keep in mind local variables have scope function wide. तो function अगर खत्म हो गया तो अब पॉइंटर जो है वो जो रिटर्न आएगा, पॉइंटर रिटर्न करने के बाद it will be pointing to some kind of illegal memory which is not part of the function.
So they have scope only inside the function. Hence, if you return a pointer connected to a local variable, that pointer will be pointing to nothing when the function ends. एक फंक्शन प्रोग्राम जिसमें एक एक फंक्शन डिक्लेरेशन है और उसके बाद दो वेरिएबल्स हैं ए और बी और पॉइंटर डिक्लेयर किया गया है और फिर फंक्शन को कॉल किया गया है और कॉल करने के बाद पी में स्टोर किया गया है उसका जो आउटपुट है तो और अगर फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो बेसिकली वी नो ऑलरेडी वी हैव डन दिस कि ये फंक्शन जो है वो दो नंबरों को कंपेयर करता है और जो बड़ा नंबर है वो रिटर्न करता है वो प्रिंट करेगा ठीक है तो इन दिस केस चूंकि बड़ा नंबर 92 है इट विल प्रिंट द लार्जर नंबर सो कीप इन माइंड कि देयर इज अ प्रॉब्लम कि व्हेन ए पॉइंटर व्हेन ए फंक्शन रिटर्निंग ए पॉइंटर तो जो स्कोप होगा लोकल वेरिएबल्स का वो फंक्शन वाइड होगा तो जब रिटर्न हो गया तो पॉइंटर जो है विल बी पॉइंटिंग एट illegal memory in other words or maybe uh, so one has to taken care of and there are two ways to handle this problem one is the safe way to return a valid pointer is either use arguments with functions yes because argument passed to the function are declared inside the calling function hence they will live outside the function as well और दूसरा तरीका क्या है कि use static local variables inside the function and return them as static variables has lifetime until the main exits. So this is a safe way out. Therefore, they will be available throughout the program. So these are two way outs of handling a problem which we just saw in the last program. So I conclude my program, my presentation, my lecture. We discuss here pointers, how we can declare pointers, dereferencing operator, which is star operator, how we can initialize pointers, null pointers, incrementing, decrementing a pointer, or pair pointer and functions, pointer to a function, declaring pointer to a function, assigning address of function to a pointer, calling mechanism of pointer to function, passing pointer to function, point functions returning pointer variables और अगर ऐसा है तो उसका safe way out two safe ways to return a valid pointer to a function. Thank you.